Hello dear students. In this video lecture, we have discussed about the some remaining parts of the epithelial tissue. Okay. So in our last video, we have discussed four types of simple epithelial tissue. Now, in this video, we have discussed about the remaining four epithelial tissues like glandular epithelium, sensory epithelium, germinal epithelium and pigmented epithelium. These are the parts of the simple epithelial tissue. Okay, in this previous classes, in this previous class, we have discussed the squamous epithelium, germinal epithelium, squamous epithelium, columnar epithelium, ciliated epithelium. In this video, we have discussed about the glandular, sensory, germinal and pigmented. So let's start. What is glandular epithelium? It is a one type of simple epithelium. Okay, it is the mainly it is modified form of columnar epithelium. एटा हमर columnar epithelium cell जोटा थिला हमर तार किछि modified माने किछि चेंजेस है कि गोटे जिंस देखा जाए माने गोटे टिश्यू देखा जाए जो टिश्यू टाके हमें glandular epithelium बोली कहते। तो देखो पहले कोन कहले glandular epithelium. This type of epithelium is consisted of columnar cells which are modified to secrete some substance which are known as some substance माने एठी कहि दियो तमे mucus हला नै एठी हमें किछि जो जिंस substance secretion होछि बोली कहला that is the mucus which are known as glandular epithelium सेटा को हमें glandular epithelium बोली कहछे। तो देखो कोन कहला glandular epithelium. This type of epithelium consisted of columnar cells. एई जाका हमर काहे तयार हिचे मेनली columnar cells. तो पहले columnar cells हमें डिस्कशन करिचे। columnar cells कोन कहला these are look like pillar like shape pillar भलिया देखा जाउतला से प्रकार cells को हम कोन बोली कहतले columnar cells बोली कहतले। तो glandular epithelium कोन हिचे it is the modified form of the columnar cells which can secrete a substance which is generally known as mucus. सेटा को हम जनरली कोन बोली कहछे mucus बोली कहछे। वो सर mucus माने कोन it is a one type of jelly substance. एटा कोन गोटे जेल लाइक सब्सटेंस हला जेल भलिया लिक्विड सब्सटेंस ता सेटा को हम mucus बोली कहछे। जनरली सिंपली जदी हम कहिबा in our nasal cavity in the inner lining of the nasal cavity contain a liquid substance which is a gel like substance which is called as mucus. So some cells will be secrete that a gel like substance which is known as mucus and the mucus will be helpful for protection to the inner lining of the tissues हला ए जो mucus ता हमर कोन करंती inner lining जो हमर जो cells अछि से मानको से प्रोटेक्ट करछे। तो देखियो हमें कोन कहला तो ए जो सेटा को हमें glandular epithelium कोन करे जनरली एटा हमर देखिबा को columnar epithelium भलिया बट एटा कोन करछि किछि गोटे सिक्रेशन करूछि सेति पय बोली एथिबा हमें गोटे अलगा ना देले सेटा कहले हमें glandular epithelium but it is the modified form of the columnar cells हला। तो occurrence कोन occurrence कोठी देखा जाय these are present in mucous layer of stomach when we can study or when we can discuss तुम पढाबो in further classes मानकरे when we have discussed about the digestive system of human digestive system जतले पढिबा when we have discussed about the alimentary canal that will be started from the buccal cavity to the anus. In this part we have discussed about the stomach, intestine, small intestine, large intestine. In these cases we have discussed about a one layer is present in our stomach. is stomach ro inner lining रे गोटे layer अछि जोटा कोन बोली कहआ जाय mucous layer बोली कहआ जाय and that mucous layer will be helpful for to degraded by the HCl hydrochloric acid. हमरो स्टोमक रे कोन होचे गोटे एसिड सिक्रेशन होचे that is hydrochloric acid. तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढाला और डिटेल्स पढाबो जेहेतु हाइड्रोक्लोरिक एसिड ता हमरो concentrated acid जेतो कि when it will be secreted in our stomach and in our intestine it will be helpful for digestion but it also can damage the tissues or the cells of the stomach. So that to protect from hydrochloric acid there will be one layer is there which is called as mucous layer. सेटा को हम कोन बोली कहछे mucous layer बोली कहछे जोटा कोन करछे हम प्रोटेक्ट करछि का को प्रोटेक्ट करछि एई जे हमर HCl टा जोटा सिक्रेशन होतला हम स्टोमक रे सेठु हमको एटा सेल टा को डैमेज करिवारे
प्रोटेक्ट करछि तो एटा देखो कोन कहले जनरली दीज आर प्रेजेंट इन म्यूकस लेयर ऑफ स्टमक एटा हमर जनरली कोड देखा जाय म्यूकस लेयर ऑफ स्टमक इंटेस्टाइन एंड रेक्टम दैट मींस इट विल बी प्रेजेंट द इनर लाइनिंग ऑफ द म्यूकस स्टमक टू रेक्टम जे एटा हमर कोन होइछि इनर लाइनिंग रे रही अछि हला तो देखो जनरली पिले एटा देखा जीवा को ए भलिया कॉलमनार सेल्स भलिया देखो पिलर लाइक स्ट्रक्चर अछि एंड इन द सम स्पेस ए जो किछि स्पेस रे से माने कोन करछन्ती म्यूकस ता हमर सिक्रेशन करछन हला म्यूकस जाका माने सिक्रेशन करछन्ती सो एटा हला हमर म्यूकस ता दीज आर द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द कॉलमनार सेल्स एंड दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन वन थिक सेल इज प्रेजेंट इन द सिंपल एपिथेलियम दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लैंडुलर एपिथेलियम नेक्स्ट आसला हमर सेंसरी एपिथेलियम कौन आसला सेंसरी एपिथेलियम तो कौन कहला इट इज कंपोज्ड ऑफ मॉडिफाइड कॉलमनार सेल्स अगेन हमर जो कॉलमनार सेल्स थिला तार एटा मॉडिफाइड फॉर्म देखिबा को दीज आर दी कंपोज्ड ऑफ मॉडिफाइड कॉलमनार सेल्स हैविंग सेंसरी हेड्स ए मानकर लाइक सिलियरी सेल्स हम पढिले सिलिएटेड एपिथेलियम पढिले सिलिएटेड एपिथेलियम भलिया ए मानकर कोन अछि जो जनरली ए माने देखिबा को मध्य हमर कॉलमनार सेल्स भलिया पिलर लाइक स्ट्रक्चर एमाने पिलर लाइक स्ट्रक्चर थिबे एवं एमानकर टिप पोर्शन रे कोन अछि ए थ्रेड लाइक सब्सटेंस इज प्रेजेंट व्हिच इज नोन एज हेड सेटा को हमें कोन बोली कहउछे हेड्स बोली कहउछे जदी ई जो हेड्स अछि हमर सिलेटेड एपिथेलियम मध्ये थिला सिलेटेड एपिथेलियम रे मध्ये हमर कोन थिला तार फ्री स्पेस रे हेड्स थिला लाइक दिस सो सेटा पय बोली कोन कहला इट इज कंपोज्ड ऑफ द मॉडिफाइड कॉलमनार सेल्स रो मॉडिफाइड फॉर्म तो कौन कहला इट इज कंपोज्ड ऑफ द मॉडिफाइड कॉलमनार सेल्स हैविंग सेंसरी हेड एट देयर टिप सेमानकर अग्र भागरे टिप माने कोन अग्र भागरे सेमानकर अग्र भागरे हमर कोन अछि सेंसरी हेड्स अछि माने जो हेड ता के हमर कोन करूची लाइट वेव बा हमर जदी किछि वेव्स बा एयर ए सब जाको से कोन करते सेंसेशन पावर्स अछि जोटा कि सेंसरी हेड्स बोली कहजे दैट इज द सेंसरी हेड्स एट द टिप एंड दे हैव दिस सेंसरी नर्व फाइबर्स एट द बेस एवं एमानकर बेस पोर्शन रे सेंसरी नर्व फाइबर्स अछि नर्व सेल्स रही अछि हला बा न्यूरॉन जोटा के हम कहते नर्व फाइबर्स जाको एटा को अटैच हेगी रही छथि एमानकर बेस रे तो टिप रे कोन रहिला पिले सेंसरी हेड्स रहिला एवं बेस रे रहिला सेमानकर सेंसरी नर्व सेल्स एही प्रकार अरेंजमेंट जो सेल रे हमर देखा जे सेही जो सेल मानकर कॉम्बिनेशन रे होइतिबा टिश्यू डाको हमें सेंसरी एपिथेलियम बोली कहते बिकॉज़ एट द टिप पोर्शन ऑफ द सेंसरी सेल्स or the sensory tissue or the sensory epithelium the sensory heads are present and at the base the sensory nerve cells are present when this type of arrangement are there then we can call it sensory epithelium हमें से प्रकार टिश्यू मानो हमें कोन बोली कहते sensory epithelium tissue बोली कहते एवं these tissues are mainly found in retina of the eye when we can discuss about the different type of sense organ we have discussed about the eye it will become in your neural control and coordination chapter when we can discuss about the different sense organs of our body then we have discussed about the eye जतो हमें कि eye विषय पढिबा सेथिरे कोन अछि one part is that is the retina and that retina will be composed of the sensory epithelium or in the retina the sensory epithelium is present next asla nasal epithelium that is the nasal cavity inner lining of nasal cavity ए जो nasal cavity भितरे हमर कोन अछि small heads अछंती at the top or the tip portion there will be heads are present तो कोड कोड रेला पिले retina of the eye nasal epithelium next asla lining of internal ear हमर जो ear मध्ये जेतो it is the another sensory organ जेतो कि ईयर हमें पढिबा सेतो तुमको इंटरनल ईयर तुम पढाबो ए जो ईयर टाको हमें तीनटा पार्ट रे विभक्त करते एक्सटर्नल ईयर मिडिल ईयर इंटरनल ईयर तो इंटरनल ईयर को जेतोले जिबा से जो इंटरनल ईयर रे मध्ये हमें कोन करि परिबा सेंसरी एपिथेलियम टाको हमें पाइबा नेक्स्ट असला म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द टंग हमर जो टंग इट इज द वन टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन दैट मींस जनरली द सेंसरी एपिथेलियम इज फाउंड in our different sense organs हमर सेंस ऑर्गन मानन करे हमें सेंसरी एपिथेलियम ता हम पाइ परिया देखबा तो सब प्रकार सेंस ऑर्गन फॉर हियरिंग सेंस विजुअल सेंस ऑर्गन फॉर दिटा हमर फॉर द टेस्ट हला ने टंग इज जनरली यूज्ड फॉर आवर टू टेस्ट तो टेस्ट बोर्ड्स जाक अछि तो जनरली these are found in the retina of the eye
nasal epithelium, inner lining of the nasal cavity. It is also a organ, smelling sense organ. So these are found in the different sense organ of our body. Here we can find the sensory epithelium. Okay, we go for the next part of the epithelial tissue, that is the germinal epithelium. It is also the modified form of columnar epithelium. तो आमर जो columnar epithelium रो एटा मध्ये गोटे modified form. तो सर एठी सबु बेले सबु जाके रे आमर columnar epithelium रो modified बोली आछि हां बिले प्राय आमर सबु जाक सेल्स जाके देखिबा को simple epithelium सबु जाके आमर pillar like structure सबु जाके आमर pillar भलिया देखा जाउछि. तो सेति पय बोली हमें जनरली ताको modified form बोली हमें कहि देउछे हला. तो एटा मध्ये germinal epithelium मध्ये देखिबा को आमर सेम ता भलिया गा. तो सेति पय बोली मु डायग्राम मध्ये करूनी modified form जनरली किछि चेंजनेस अछि. तो कौन कहला germinal epithelium? It is the modified form of columnar epithelium. The cells of germinal epithelium undergo repeated cell division. एमानकर कौन होंती repeated cell division जाको चले. Repeated माने continuously in their body or in this cell the repeated cell division is there. आमे जतो cell तमे डिस्कशन करिबा cell रा आमे cell division को जिबा सेतो आमे देखिबा meiosis division, mitosis division. तो एमानकर देहरे कौन होची? It is the one type of cell or it is the modified form of the columnar cell which have goes under the repeated cell division is occurs. Where the repeated cell division is occurs, these cells are called as germinal epithelium. जो सेल की कंटिन्यूअसली हमर डिवीजन चलीची सेल डिवीजन होची से प्रकार सेल्स ता हमें germinal epithelium बोली कहबा. जनरली these are mainly found in the reproductive organ or the primary reproductive organ of the female and the male. So एटा हमर reproduction it will be in your 12th class or in the second year. तो जेतोल के हमर reproductive organ आसला primary reproductive organ of male is the testis and the primary reproductive organ of the female that is that found in the testis and ovary where the repeated cell division is goes on or repeated cell division is occurs. Okay, this is all about your germinal epithelium. Next we have discussed about the pigmented epithelium. So कौन कहला pigmented epithelium? This type of epithelium contain pigments. एई जो epithelium रा हमर कोन अछि small pigments जाक रहछि. Generally the pigments and the rods are found in our visual sense organ that is the eye. हमर eye रे इटा प्राय देखा जाय pigments जाक. तो different type of pigments which will be helpful for the detecting of the colors. हम कलर जाके जे हम देखु छे different colors अछि. Generally जो black हमर जो बोर्ड ता देखियो green color हला नै एई जो हमर जो डस्टर ए जो आउटर सरफेस एटा ग्रीन कलर राइटिंग द लेटर्स दीज आर व्हाइट कलर. एई जो कलर जाको जे डिटेक्ट करूची हमर आई करूची जनरली. तो सेई जो पार्ट्स हमर जो पिगमेंट सेल्स अछि जो जे कि हमर कलर को डिटेक्ट करिवार सहायता करे. तो कोन कहला हमर पिगमेंटेड एपिथेलियम? दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम contain pigments which help in the vision जोडा कि हमर देखिबार सहायता करे. तो जो ऑर्गन ता हमहु देखिबार सहायता करछि से जगह रे इटा थिबो कि हमहु देखिबार सहायता करछि आई. तो कोन कहला these are present in the retina of the eye. तो सर एई जो रेटिना ऑफ द आई एठी मध्ये हमर कहिथिले सेंसरी एपिथेलियम अछि एबा आपण कहले पिगमेंटेड एपिथेलियम अछि. तो एक्चुअली काहे तयारी होछि? अरे बाबा ई जो रेटिना ता हमर combination of the sensory epithelium and pigmented epithelium माने we can found both the sensory cells as well as the pigmented cells in the retina. ये जो retina of the eye बा retina हमर eye रो जो retina अछि जो retina रे हमें both sensory cells भी पाई पारछे pigmented cells मध्ये पाई पारछे. This is the all about the different parts of the simple epithelial tissue or simple epithelium where one thick cell is present. This is the complete of the simple epithelium. Bartaman amra simple epithelium ro different parts. Approximately we can discuss about the 8 parts of the simple epithelium. Now ha eta ame total amra ebe simple epithelium part hala complete hala. Next we have discussed about the compound epithelium. Amar next time jetol discussion kariba sethi ame dekhiba compound epithelium. Compound epithelium puni ame di bhag re vyakta kartile stratified ha मन पड़छि ना सेठी मन पका जोटा कि हमर कंपाउंड एपिथेलियम जेतो क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू पढाइथिली सेही जो सेठी हमें डिस्कशन करबा हमें स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर कंपाउंड एपिथेलियम. तो दिस इज ऑल अबाउट योर एपिथेलियल टिश्यू. ओके पिले थैंक यू.